So, in previous video of this series, we have discussed about the monolithic architecture and why is it a need to move to the microservices. So now in this video, we are going to explain the or we are going to explore about the microservices. So जब भी microservices हमको implement करनी है, which are the things that we have to keep in our mind. So that things we are going to discuss in this video. सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनहर जाडेजा और आप सभी का मैं मेरी चैनल डिबग डायरीज में स्वागत करता हूँ. सो एज वी हैव डिस्कस व्हेन वी आर डेवलपिंग द माइक्रोसर्विसेज वी हैव mainly three parts. We have a client UI, we have a API gateway, and at the end we have a backend services. सो नाउ मैं आप एक एग्जांपल लेके चलो. एज ऑफ नाउ वी आर डेवलपिंग द ई कॉमर्स साइट. So there will be a definitely one client UI will be there. उसके बाद जो भी मेरा कोड था वो मैंने सर्विसेज में डिवाइड कर दिया. लेट्स से आई हैव अ प्रोडक्ट इन्वेंटरी, वी हैव अ प्रोडक्ट, आई कैन से द कार्ड, we have a payment, and we have a notification and so on, right? So now the thing is that let's say we have created the different API for our services. Like S1 की हमारे पास API है, प्रोडक्ट की हमारे पास कार्ड के लिए API है, उसके पेमेंट के लिए API है, सभी की API के अलग अलग प्रोजेक्ट्स है. So the now the concern is that S1 is running into the let's say 501 port. S2 is running in the, we can say, the 502 port, and so on for the S3 and S4. So now the concern is that जब भी मैं क्लाइंट यूआई से कॉल करूँगा मेरी माइक्रो सर्विसेज को, तो मैं ऐसे तो नहीं कर सकता कि लेट से मुझे प्रोडक्ट को कॉल करना है तो मैं 501 को कॉल करूँ, S2 को मुझे कॉल करना है तो मैं 502 को कॉल करूँ. ऐसे तो लेट से अभी तो हमारे पास लिमिटेड 2 या 3 सर्विसेज है. कभी ऐसा भी हो सकता है हमारे पास 15 सर्विसेज है, 20 सर्विसेज है. तो उस टाइम पर हम ऐसे फिक्स नहीं कर सकते और वो सब मैनेज करना भी क्लाइंट यूआई के साइड हार्ड हो जाएगा. सो नाउ व्हाट वी कैन डू दैट वी कैन इम्प्लीमेंट वन मिडलवेयर एंड दैट इज अ एपीआई गेटवे. सो एपीआई गेटवे क्या करेगा, इट विल वर्क एज एन मिडलवेयर that before going to the H1 and before calling it to the H2 हम क्या करेंगे, एक API गेटवे बनाएंगे. तो उसका पोर्ट क्या होगा, तो लेट्स से आई एम डिफाइनिंग इज इन 7000 और लेट्स से 701. सो अब क्या होगा कि जब भी मैं 701 को कॉल करूंगा, आई विल गोइंग टू कॉल यू इन माय बैकएंड दैट आई एम कॉलिंग द बैकएंड एपीआई गेटवे. ओसेलोट एक डॉटनेट की ओपन लाइब्रेरी है जो अपने को एपीआई गेटवे इंप्लीमेंट करने में मदद करता है, वी कैन से. सो इट इज एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर द एपीआई गेटवे इंप्लीमेंटेशन. सो अब इसके अंदर क्या होगा, जब भी मैं 701 के बाद जो भी यूआरएल मैंने जो बनाई है उसको मैं जब कॉल करूंगा, दैट मीन्स दैट कॉल इज गोइंग टू fetch by the API gateway. Now API gateway have to define that which particular backend service that I want to call. Let's say whatever the UI I have or the whatever the service I have called. So as per that they will decide that should I call to the S1, should I call to the S2, or should I call to the S3. So this is the main about the API gateway Ocelot, right?